ऐसा क्यों करते हो तुम लोग? देखो अभी बोला है we have to start. जल्दी छोड़ देंगे 15 मिनट्स पहले 8:50 हम 15 मिनट पहले क्या करे थे जो है ना पहले मैं 15 जो जितना टाइम अलाउड किया है ना उतना टाइम मैं पढ़ाती हूँ और फिर बाद में मैं तुम्हारे पॉइंट पर तुम्हारे पॉइंट तो मुझे आना ही पड़ेगा. We have completed that topic ना first group hydrogen sorry hydrogen वाला चेक करो हाइड्रोजन हाइड्रोजन 28 years हो गया यूजेस हो गया हाँ नया चैप्टर स्टार्ट करना है नया ये स्टडी ऑफ गैस लॉस स्टडी ऑफ गैस कुछ नहीं कुछ लिखना बिखना कुछ नहीं खाली सुनो आंसर दो फिर अपना माइंड को थोड़ा फ्री कर दो क्या होने वाला है नहीं होने वाला है ये क्वेश्चन के आंसर सुनते नहीं अगले क्लास पढ़ेंगे आज पेज नंबर आनंद 122 122 घड़ी मत टाइम मत लग 122 टाइगर टाइम पूछ रहा मत कुछ नहीं कर सकते हैं बोला है ना तुमको सवाल पेज छोड़ देंगे ओके हियर so we are on the new topic study of gases. This topic is again it is very important because questions are there in class 10 as well as there will be for your entrance exam JEE karo NEET karo this complete topic is there. Okay, so concentrate on this topic. As such we are not writing anything but normal discussion we can do for next 30 minutes. Now study of gases your state of matter is given. But matter exists in 3 different states. Okay, so 3 different states of matter are. देखो तुम सारा फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे केमिस्ट्री में निकालो मत हाँ मैं पहले बोलते रहे states are solid, liquid and gas phase. वो मैडम बोले 10-15 मिनट 15 minutes बेल बजेगा ना बेल नहीं बजेगा फिर उनको भी हो जाएगा फिर सॉरी अरे भी छोड़ आप ही छोड़ दी ना पहले टाइम पे ही हो नॉक कर दे okay solid liquid and gases these three are the states of matter okay we will go with the normal example of H2O water okay so water in solid state it is ice then liquid state water in liquid state is our normal water and in gas state it may be steam or water vapors ये 3 states मैंने लिख दिए okay now for example this is your solid state water here we have taken water in 1 cube here we have water in the vapor state in another cube क्या हो गया पानी चाहिए नहीं ऑलरेडी 15 मिनट्स में जल्दी छोड़ते हैं और तेरा क्या हो गया हाँ जल्दी फास्ट नहीं रहने तो क्यों बोलो ना ऐसा एग्जांपल देना जरूरी है क्या मैं ये लेसन स्टार्ट कर दिया हाँ उसके स्टार्टिंग से मैं बता रही हूँ तुमको देना है बुक में तो दो एनीवेज दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट इन योर और कुछ it is only for understanding how this state differ from each इसका कोई वेहिकल आने वाला है क्या जब कॉल करने क्या नहीं तो अपना से नहीं अरे ये देखो थोड़ा सीधा बैठो एक चले बैठो और फ्रस्ट्रेशन निकाल दे हां चल ये ऐसे नहीं so these 3 states solid liquid and gases
Now look at the three state with example and what is the difference between this three state. वो मुझे शॉर्टकट में बता दो. देखो मैंने आपको पहले बोली हूँ कि वेट लेट मी एग्जाम है ओके अगर आपको कभी जाना है तो आप प्रायर नोटिस में चले जाना ऐसे नहीं चलता. दूसरी थिंग कि अभी यहाँ पर बैठ के इफ यू आर टेकिंग योर फ्रस्ट्रेशन आउट इट इज ऑफ नो यूज. यू आर नॉट देयर यू आर नॉट हियर आल्सो. कहीं तो प्रेजेंट रहो बिकॉज दिस थिंग आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट अगेन. एग्जाम है टेस्ट है ओके वी कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग. छोड़ रहे हैं ना जल्दी कहीं तो रुको मेंटली. यहाँ 2 हफ्ते पहले से बता रहे तुमने आज फिर से उनको इन्फॉर्म करना चाहिए था. ऐसे नहीं चलता पार. हमको अगर हमको नहीं आना है तो वी आर नॉट कीपिंग स्टूडेंट लाइक दिस ना. वी आर इन्फॉर्मिंग 2 days प्रायर ऑन द सेम डे अगेन वी आर इन्फॉर्मिंग दैम. प्रोटोकॉल वी नीड टू फॉलो ना. रिमाइंडर तो देना पड़ता है. अगर आप आज आते तभी भी बता देते थे ना कि मैम टुडे आई विल लीव अर्ली. समझ जाता था ना. इतना सब वो लोग कहाँ दिमाग में रखने वाले. चलो एनीवेज. So what is the basic difference between these three states? कहाँ पे? Which state you are talking about? Solid. Intermolecular space is large enough. Okay. What about the forces of attraction? Weakest molecules are away from each other. So we can draw one molecule here. We can make one molecule here or here somewhere. यहाँ पे कहीं भी हम एक मॉलिक्यूल बना देंगे. बट वन थिंग वी शुड रिमेम्बर मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर. Okay, intermolecular forces of attraction they are very less. Okay, this is the reason why they move anywhere. Okay, because there is no attraction. अगर परफ्यूम सादा परफ्यूम का बॉटल हमारे पास में है we can smell it in that corner also because there is no forces of attraction between the gas molecule. What about this? more than solid but less than liquid. More than solid but less than liquid. Yes. So the distance between two molecules is less than solid but more than gases, right now? So if one molecule is here, another molecule will be here. पास में रहते. They are close to each other. In short, they are close to each other. So intermolecular forces are more. In case of solid, It is intermolecular forces of attraction, distance between two molecules this close to it. close to each other. So two molecules, they are close to each other. And due to this, what happened? The forces of attraction is more. याद रहेगा ना? So first thing, the intermolecular forces of attraction, they are more as compared to liquid, as compared to gases. This affect any other properties affected by this particular thing. Distance is less, intermolecular forces are more. Okay, any other property is affected by this particular thing? No. What about shapes? The liquid and gas would take the shape of the container. Liquid and gas take shape of the container. Solid, Is fixed, fixed. rigid. Liquid take the shape of the container. जिसमें डालो उसका वैसा शेप बन जाता है. यहाँ पे सेम और डिफरेंट. More कुछ बोलो. was the same. Take shape of container. वेदिका shape. Yes, yes, H2S में नहीं, गैस में H2S अब यहाँ पे हो गया. Solid has fixed, rigid shape. They are crystalline, they are hard. Liquid take the shape of the container. बराबर है ना? What about gases? Free state में रहता है. कुछ shape है, definite shape है, no definite shape. No definite shape because what we are saying molecules are far away from each other. There is no intermolecular forces of attraction. एक molecule यहाँ है तो एक molecule वहाँ पर है. So it will not have shape ना. So it does not have any fixed or definite shape. This is only in short summary for solid, liquid and gaseous state. We have to deal only with the gaseous form.
Okay, so here the first part which is given, it is kinetic molecular theory of gas. एक जाके वहां से कलर वाला मार्क कर लेकर पार्ट गो एंड ब्रिंग वन कलर लेकर ना ब्लैक वाला है. Now from this we have to deal with only this part where the intermolecular forces are very less. In short, distance between the two molecules is much more greater as compared to this liquid as well as gases. कितना आप लोग याद रखो. Now for example, if you have a cylinder, this is a cylinder. This cylinder, it is fitted with movable piston, and this cylinder, it is filled with the gas. Okay, so this all are the gas molecules. ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट पहले समझ लो, फिर बाद में आगे देखेंगे. Okay, now this all are the gas molecules. This piston, it is movable. Movable मतलब if you increase the external pressure, it will go downward direction. Okay, two pressure will be acting, internal pressure as well as external pressure. Now case one, if external pressure is high. Okay, ध्यान रखो. हाँ, we are saying intermolecular forces of attraction are less, molecules are away from each other. We are studying kinetic molecular theory. Kinetic means what? Kinetic energy, moving body. Potential energy means stationary. So total energy we always consider as potential energy plus kinetic energy. Right, Hannah? This is at body at stationary position. This is for the body which is in the moving position or in motion. Now, as such, this molecule, they don't have any forces of attraction. They will move here and there. Kinetic motion is there. Okay. Same time, they will exert pressure on the wall of this container. They will collide with each other. Yes. They will create pressure on this piston from inward direction. Yes. बराबर है ना? Because they are free, they can move anywhere. They can either create pressure on the wall of the container. They can create pressure on this moving piston. They can collide together, and due to collision, again energy is released. Right now, so in short, they are associated with the energy. That energy, it is of kinetic energy. Now see carefully, if we are increasing the external pressure. External pressure means we are pushing this piston in the downward direction. So what will happen? This piston or this cylinder, it is filled with gas. क्या होने वाला है? आपने बोला free of gas ना? Free of gas नहीं है. That cylinder, it is filled with gas. Free of gas. उसने तो तुमको पहले ही बोला है. You are here now. Be here only. वहां पे रहेगा तो उधर का भी नहीं और इधर का भी नहीं है. What happen if we increase the external pressure? अच्छे से बोलो.
the volume of gas will decrease. volume of the gas will decrease. Okay, so when we are increasing the external pressure, for example, this is the initial position. After some time, after applying the pressure, it will come here. For example, it will come here. Okay, whatever molecules which were away from each other, they will come closer to each other. Automatically, there will be decrease in the volume. Correct hai? There will be decrease in the volume, and you might be knowing that gas on compression, on increasing the pressure, gases are converted into liquid form. This is one of the property of gas. Now what we are doing, we are just increasing the external pressure where internal pressure is less. With increase in the external pressure, what happens? This molecule, they will come closer to each other. Automatically there will be decrease in the volume. Okay, so if external pressure is high and internal pressure is low, then as a result of this, there will be decrease in the volume, right? Decrease in the volume. Opposite case. Sure. Opposite case. If you increase the internal pressure, then what will happen? If you increase the internal pressure, for first one, external pressure high and internal pressure is low. Volume is reduced. But in second case, if external pressure is low and internal is high, then what result will be there on the volume? It will increase, decrease, or it will remain the same. Volume will increase. Volume is increase means what is happening here? They are coming closer to each other, or they are going still away from each other. Closer or away from each other? Away from each other means if the position of piston is here initially, we are taking this position here somewhere. Okay, automatically we are giving more area. More area means what? Molecules are still, they are going away from each other. So volume, it will increase. Okay, this is for pressure. Now let us consider for temperature. Temperature. Okay, temperature means what we are doing? We are heating that gas. Okay, so when you are heating that gas, what about the motion of the particles? It increases, motion of the particle will increase. In short, kinetic energy will increase. Okay, and with the increase in the kinetic energy, this molecule will collide again to the wall of the container, to the wall of the cylinder. They will collide in between them. They will collide with this piston, and there will be increase or decrease in the volume. Increase in the volume. Piston will be shifted in upward direction. Upward direction. Barabar hai na? And if you decrease the temperature, then kinetic energy will decrease or increase? Decrease. Barabar, kinetic energy will decrease. But what about the volume? Volume will decrease हो जाएगा. Volume भी decrease हो जाएगा. जरा ध्यान से. Volume भी decrease हो जाएगा. No, it will remain same. With the increase in the temperature, volume increases. बराबर ना, क्योंकि kinetic energy is increasing, rate of collision it will increase, but with decrease in the temperature, whether volume will decrease or it will remain the same, increase तो नहीं होगा. Increase होगा. मैं पूछ रही हूँ. अच्छा, आपको क्या लगता है डिक्रीज होगा?
remain thus. Right, right? No change? Sure. Not sure. Okay. Just you remember this parameter for temperature, two possibilities are there. With increase in the temperature, we are increasing the rate of collision. And when rate of collision is increased, automatically there will be increase in the volume. Similarly, if you are decreasing the temperature, this means what? We are decreasing the rate of collision. Okay, rate of collision, the molecules move नहीं होने वाले, they will not exert any pressure. बराबर है ना? Slowly we are decreasing the temperature. So what happen? Automatically volume it will reduce. But how it is working? By the means of different law, two laws are there in your syllabus. By the means of law we will study. Now here the first thing which is given is a first one, composition of gases. So composition of gas in this one, these particles are moving in all possible direction. These particles are small in size. Small in size. हाँ, आप मुझे एक बात बताओ, मैंने जैसे आपको बोला we have gas in this cylinder. If you are increasing pressure, decreasing pressure, increasing temperature, decreasing temperature, whether there will be any change in the composition of the gas. If it is CO2 gas, instead of CO2 you are going to gas O2 gas. ऐसे होने वाला है. There is no change. Okay. Then second one, gases have neither fixed volume nor fixed shape. Correct? This is what we have discussed by using three Qs. Neither same volume, fixed volume or fixed shape. For that one, shape example you can take in cylinder, you can take in circle, you can take in conical flask, you can take in any of the apparatus. Fixed shape. And for fixed volume, if you are changing these parameters, if you are changing pressure and temperature, then there will be automatic change in the volume. Barabar? So second point is correct. Gases have neither fixed volume nor fixed shape. Then next one, gases exert pressure in all direction. It is correct. क्या हो गया? Time है अभी तक. 20 minutes are there. मैं एक बात बताऊं, don't feel bad. हाँ, ये ऐसे लास्ट मोमेंट तक प्रिपरेशन आप लोगों का क्यों ले जाए? You are not preparing from the same day. Why? एक बार स्कूल में हो गया तो आप लोग बंद कर देते हो. Directly on the last day you are opening that book. बट अगर कोई चीज याद नहीं रहती तो उसको लास्ट मोमेंट तक रिवाइज करके बेटर होता है. तो आपका ऑलरेडी हो चुका है, आप रिवाइज करना है ना. बट अभी भी याद नहीं हो रहा तो क्या? चैप्टर स्टॉप कब हुए थे? जब तो अभी लिखते टेस्ट में. तो you were aware of your tactics. Well, okay, see, it makes Yeah. मेरा ना वहाँ पर है आपको तो करना पड़ेगा. यहाँ पे देख, क्या पॉइंट है? Gases exert pressure in all possible direction. Okay, so here we have gas in this cylinder. It is exerting pressure on wall of the container. It is exerting pressure on this particular movable piston from inside. Gas molecules are present here. They are colliding with each other. Due to this, again pressure is created. So your next point, gas exert pressure in all possible direction. It is correct. With the help of cylinder, we can explain it. Then next one, gases are highly compressible. So if you increase the pressure, the gas, it will be converted into the liquid form. बराबर? So they are compressible. ये भी हमको point पता है. Then gases are highly expansible. Gases are highly expansible. In this room, oxygen is present.
We have a mixture of all the gases. इस रूम में गैस है, बाजू वाले रूम में गैस नहीं है, ऐसा है क्या? So they are expansible. Even normal perfume bottle, if you are opening, it will spread in all the rooms. Then gas molecule have low density because molecules are away from each other. So due to this reason, they have low density. Then next one, gas has natural tendency to diffuse or to have uniform diffusion. They will mix with any other gas and that proportion, it is always uniform. And gases can be liquefied. They can, with pressure, they can be converted into liquid form. See, very bad classes. आपको पढ़ना है ना, फोटो बुक और पढ़ो. I will leave you at 8:50. और over. Open your book and start reading. Not this subject, whichever test you have tomorrow, now you start reading. इतना तो करना ही है, इतना तो आ ही जाएगा। छह वर्ष लगाने के लिए और पढ़ना पड़ा वो पहले मिस्टेक्स भी सारा थे बाप रे। और मैंने बात कर इसलिए नहीं बोला है, आपके पास वो वाला नहीं ना तो कितने मिनट की होगा। Science से प्रॉब्लम है और केमिस्ट्री भी नहीं है ना तो मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर डू इट क्या नहीं जब मुझे रिस्पांस नहीं मिल रहा तो आई कैन नॉट कंटिन्यू मैथ्स बुक ना दैट यू कैन डू हाँ नहीं है ना केमिस्ट्री तुम्हारे पास में है read that part kindly theory आप पढ़ा तो चाहिए। नहीं better such I don't like this if you are not giving your 100% then what is use of that Yeah, they don't do gas, I say, क्या गैस अगर जो भी गैस और लिक्विफाई हो सकता क्या फूटेगा ये तो हाँ हाँ
इस टाइम फूटेगा प्रेशर से, गैस का प्रेशर से पहले। It is one of the property of gas that it can liquefy under high. That apparatus will not. अब तो नाइट्रोजन है लिक्विड वाला वो डाक्यू रहता है। Nitrogen है ना, it is obtained in the gas form and by compression it is converted into liquid. कौन सा तुमको नाइट्रोजन या नाइट्रोजन और अमोनिया you're saying नाइट्रोजन लिक्विड ठंडा क्यों रहता है? आपको कहाँ मिला था ये सीधे नहीं आपको? नहीं मैं भी तुझे पूछ रही तुझे पॉइंट कहाँ मिला था मुझे पता। I'm asking you. It is given in your book. मैं तो आपसे अच्छे से पूछ रही हूँ whether it is meant then in which book it is mentioned. It is nitrogen or anything else. First read that question properly. जो भी कुछ sentence है ना read it properly. Whether it is nitrogen or any other. हम ठंडा तो लिक्विड नाइट्रोजन ही बोलते हैं। तो मैंने उसको वही क्वेश्चन पूछा है कि वो कहाँ पर है तुम्हारे बुक में है या नहीं? आज लिक्विड नाइट्रोजन ट्राई कर देता है किसी की सब्सटेंस में डालता है क्या कर दिया? फ्लश भी हो जाता है कोई भी चीज को नहीं हो जाता है। कौन वो सब्सटेंस और लिक्विड नाइट्रोजन? Okay, so they are saying that liquid nitrogen is having low temperature. It is cool. आप क्योंकि वीडियो देख पता है एंड उसका फ्लावर है रेड टेप के आसपास निकाल के इसको ब्रश में तो तुम लोग जो वीडियो देखते हो ना मुझे पता नहीं तुम कौन कौन से वीडियो देखते हो लेकिन सारे वीडियो से दिखाते वैसे फंक्शन नहीं करते। इससे पहले कुछ भी ना कहाँ पे उसने दिया है वो मुझे बता दो। सो अकॉर्डिंग टू दैट आई कैन आंसर क्योंकि बहुत सी चीजें वीडियो में जस्ट स्किप करते हो वीडियो में। सो दे आर नॉट गिविंग एवरीथिंग इन डिटेल। Some part, sometime it is missed. Okay, liquid nitrogen. If you are saying that liquid is based on H2, N2 के बारे में आपको बोलना है ना? About KMT क्या होता है? kinetic molecular है। कोई मैं convert कर दी। So you have test only in this week or next week also. this week पिछले वीक भी था This is the last week. No. One more week. नेक्स्ट वीक ऐड और शायद इसके अगले वीक भी हो नेक्स्ट वीक भी और देना हमारा ये 10th क्लास में सैटरडे से शुरू हुआ। So next Monday है ना be careful नहीं आ रहा because okay up to you it's your decision. But those who are present ना तो 100% यहाँ पे देना पड़ेगा। देखो मैथ्स बायोलॉजी केमिस्ट्री को फिजिक्स है और अगर you all in for something so that this stress or personal get for next academics lessons after the I'm getting it practical and come to next week based exam explain level ये भी पता है read that by Hindi. Read that part. Study of gas law.
आनंद पढ़ो टेक्स्ट बुक पढ़ो अपना बोलिए इसकी वाली नहीं आई and I don't know what result you have in your previous exams. But absolute zero कैसे होता है? नहीं वो 275 डिग्री से होता है. Point. Which part? Absolute zero. नहीं वो कौन से वाले part में kinetic Molecular motion. I will explain. वो इसके वाला पर नहीं आ रहा इसलिए डाउट. अगले क्लास में नहीं आ रहा इसलिए अभी डाउट. If you understand the class will be postponed. हम ऑन का नहीं पता नहीं है. इन लोग का तो एग्जाम खत्म हो रहा है. हाँ ये लोग आ जाएंगे. तो इसके आगे जो चार्ज लॉ है absolute zero temperature is charge law अगर आप अगले हफ्ते में नहीं आए तो उसका रिकॉर्ड आ रहा है उसमें भी नहीं आ रहा. मेरा जैवलिन पे टूर्नामेंट तो एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है. हाँ only on Monday she are not coming. अगले मंडे रख फिर वो क्योंकि थर्सडे और फ्राइडे को सीएएसई का पेपर. Yes. तो पेपर मैथ पेपर And 8 हम जा सकते हैं. 20 10 to 15 minutes for it. हाँ आप 8:15 बोलेगा. हाँ 8:15 हो गए. घूम ले. आपकी है ना आपने टीचर का नाम तो आपसे और एक्स्ट्रा क्लास नहीं क्या दादा बच्चों से पूछना था ना उनका टेस्ट है या नहीं है आज